श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासाश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इयघोरे कलो प्राये जीवश्चासुरतां गत क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्व साधनं त्वददादुना। चिन्तामणिलोकसुखं सुरद्रुस्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिशौनकचित्ते ते हितो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तेषहेतुकं तदहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नानशेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुद्धेन विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुरा कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व महिमहान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्च हासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनानज। लघुन्यनानि जातानि
कौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनाच्छ्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम् सप्ताहेन श्रुतं चेत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्ये पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्युतमेत्स सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारेस्तस्य भाषित। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिसंयोग कुत्र ते सः। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्सङ्गार्थसमायाता दिदृशुस्तत्र नारदं। कुमाराऊचु कथं ब्रह्मन्दिनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्चर्म मनः सन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणा मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या हृपद्रुता पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुतागेः शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभाध्यंपतीनां च कल्कनम् आश्रमाय वने रुद्धास्तीनार्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिश न योगिनैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलितावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरिणो तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धो द्वौ पतितो पार्श्वे निश्यन्तानवचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विज्यमाना शतस्त्रिविबोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्टा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्टा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वच बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखदशान्ति भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं सदा। नारद उवाच कासि त्वं का विमोचे वां नार्य का पद्मलोचना
वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो। ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो। गङ्गाध्यासरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता। तथापि न च मे श्रेयसेविताय सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचिस्तस्त्वं तपोधन। वार्ता मे वितताप्याति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तत्र घोरकलेयोगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका। दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दतां। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणे। जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु चाम्प्रतम्। इमो तु शयितावत्र सुतो वैकिष्यत शमात। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता। साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमोकुत। त्रयाणां सहचारित्वा द्वे परित्यं कुतः स्थितं। घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। वदयोगनिदधीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतवानगे। न विषादस्तव्या कार्यो हरीशं ते करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरे। नारद उवाच शृणुष्वावाहिता बाले युगोऽयं दारुणकली। तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्थपांसि च। जनागासुरायन्ते शाट्यदुष्कर्मकारिण। इह सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह्रिसादव। धत्तेधैर्यं तु यो धीमान् स धीरपण्डितो तवा। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते। न त्वामापि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागाधैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। अत्रेमो ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चत। किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिमन्यतेऽन्ययो। भक्ति उवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो युषुचीकली। प्रवृते तु कलो सर्वसारकुत्र गतो महान्। करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते। इमं मे शयं छिन्धि त्वदाच्चा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृष्टत्वया बाले प्रेमता श्रवणं कुरु। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षां त्यक्त्वा स्वपदं गता। तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधनबाधक। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दिन्नवच्छरणं गत। न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभो। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलं लभते सम्यक् कलोकेशकीर्तिना। एकाकारं कलीं दृष्टा सारवत्सारनीरसं। विष्णुरात स्थापितवान् कलीजानां सुखाय च। कुकुर्माचरणात् सार सर्वथा निर्गतोऽधुना। पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषायता। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गत। अत्युग भूरि कर्माणो नास्तिकारोर्वाजना।
ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतस ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गता मनश्चस्या लोभादम्भात् पाखण्डसंशयात् शास्त्रानभ्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारं स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति त्वद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भज्ञेन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्येकायाधवस्ते वचनरमचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः।